We have finished chapter 1 and chapter 2. Now we have talked about the concept of business. We have talked about the concept of profit. Now it's time to understand the small scale industry. A very particular chapter is what we are going to finish now. It will hardly take 2 or 3 lectures for finishing off this particular topic. Understand a point. In the current scenario, the most important thing that we have in the current scenario, the most important business activity that the government is focusing upon is the small scale industry. If you would have observed for last 7-8 months, whatever are the announcements which are coming from the government, whatever are the supports which are coming from the government, those are basically for the small scale industry. This small scale industry is commonly called as the MSME, that is micro, small and medium enterprises. MSME. Since the time this pandemic situation had started, since then Sitaraman madam was continuously focusing on this MSME sector. She was continuously giving some of the other support for this MSME sector. Why they were doing it was basically for the purpose of giving the strong support to the small scale industry, क्योंकि अगर small scale industry नहीं develop हो पाई, then in that case we won't be able to survive into the businesses over a longer period of time, is what everyone understands. Why? Understand the reason behind that. These small scale industries only become the large scale industries at a later date. Today, if someone is having a kind of idea, Vodafone idea wala idea nahi, wo to bhi ho gaya. If someone is having the idea, someone is having a concept, someone is having a kind of a, a, a kind of product which he wants to bring it in the market. If that person is not being supported, then such product will surely be brought by some large scale organization, and then that particular product, that particular person will never be able to grow. पर वही अगर उस बंदे को उस पॉइंट पे सपोर्ट किया गया कि उसने कोई एक प्रोडक्ट लाया है जिसका मार्केट में डिमांड है या जिसका मार्केट में डिमांड हो सकता है, गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल इन दैट इज द अर्बन कंपनी. आप अगर ऑब्जर्व करो, अर्बन कंपनी या अर्बन क्लैप, जो पहले अर्बन क्लैप हुआ करता था, नाउ इट इज कॉल्ड एज अर्बन कंपनी, जैसी कंपनी का अर्बन एरियाज में इतना डिमांड है, इवन इन द करंट सिनेरियो, इवन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. Why they are having the demand? Because there are so many people who are into the working class. They do not have the time to go for the home cleaning. They do not have the knowledge of doing the plumbing activities. They cannot have the kind of visit to the salon outside due to the risk. And to avoid that, this urban company is providing the services at home. They are providing you the deep home cleaning services, जिसके लिए हम लोग मौसी लोग को ढूंढा करते थे, मौसी को कहा करते थे कि तुमको 2 दिन का एक्स्ट्रा पगार देंगे एंड यू डू द सर्विस फॉर दैट. फिर वो हमारे ऊपर एहसान किया करती थी और फिर वो पूरा साल गिनवा के देती थी, फिर उसके अगेंस्ट बोनस लेती थी एंड ऑल दैट. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड? This urban company has been replaced by, sorry, these maushis are being replaced by this urban company. And when this was a small organization, at that time it has been supported, that's why it has become that big. तो ये जो large scale organizations होती है, ये overnight large scale नहीं होती हैं. Those are originally the organizations which develop as a concept. And then later on, step by step, it grows. And when it comes to the large scale, we suddenly realize, oh, this was the concept.
Similarly, there are so many products available in the market. वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होगी या नहीं. लाइक no, all startups, Satej, cannot be considered as the small scale industries. Why? Because there are certain startups who are being provided the support at the initial point itself, and those have become the large scale at the beginning itself. A very simple example to that is Big Basket. Big Basket was a startup, it was a concept, but it was given the support by a private equity player. An investor is called a kind of category of investor is private equity player. जो प्राइवेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, दे आर कॉल्ड एज प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स. बहुत बड़ी कंसेप्ट है, उसको डिटेल में हम लोग बाद में कभी सीखेंगे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम, फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, द पर्सन प्रोवाइडेड द फंड्स. This big basket became a concept and they have started doing the activities at a very large scale now. Affording a person like Shah Rukh Khan is not an easier task. Only when you are having the sufficient of the funds available with you, you can do it. Amul is a cooperative society. Amul cannot be considered, Vedant, Amul cannot be considered as a small scale industry. In fact, Amul supports large level of small scale industries. जो छोटे छोटे गांव में जो कैटल कैटल मेंटेन करते हैं, उसका जो मिल्क निकलता है, वो मिल्क अमूल में सप्लाई होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सर्वाइव. Can small scale industry have their branches? Yes, of course. There is no problem, Sanskruti. There is no issue on small scale industry having the multiple branches. Small scale means what? The level of investments into their business is small, up to a particular specified limit. Plant and machinery, buildings, इसमें उनका investment कम है. That's point number one. Point number two, their turnover is limited. The maximum turnover that has been designed now, that has been revised now as per the government guidelines, is 100 crore का turnover. तो अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ तक भी है, तो भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में गिने जाओगे. That is what the government, these are the recent guidelines, these are not given in your textbook. अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, उसमें ये एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया गया और उसमें टर्नओवर का लेवल 100 करोड़ किया गया. That will be considered as the small scale industry. तीसरा क्राइटेरिया होता है आपके पास एम्प्लॉइज कितने हैं. तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, आपके पास एम्प्लॉइज कितने हैं, और आपके पास टर्नओवर, आपका सेल्स कितना है, आप बिजनेस कितना करते हो, उसके हिसाब से तय किया जाता है कि वेदर यू आर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और यू आर अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ऑलराइट, so these are the different things which we have to understand. We have to learn what is a small scale industry. We have to understand why the small scale industry is important. अभी जो मैं आपको examples बता रहा था, the point that I started, कि अगर आप small scale industry को support नहीं करोगे, तो नए inventions कम आएंगे. The large scale industry will keep on exploiting you, and at the same time, the small scale industry won't grow if those are not been supported properly. So in this chapter, we have to understand what is small scale industry. We have to understand what is the importance of this small scale industry. And we have to, of course, understand what are the different challenges. क्योंकि challenges सिर्फ इस एंगल से नहीं देखने चाहिए कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले बंदे को लोन लेने में चैलेंज आता है. इनफैक्ट चैलेंज इज टू द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, कि अगर किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले बंदे को इन्होंने फंडिंग कर दिया, कल को वो पैसा वापस नहीं दे पाया क्योंकि उसका स्टार्टअप चला ही नहीं, तब आप क्या करोगे? सो दैट इट्स अ काइंड ऑफ ट्विन डिफिकल्टी और ट्विन काइंड ऑफ चैलेंज. Now what those challenges are, we'll be talking about that. So these are the different concepts that we are going to talk about. Pranav, चाय लाके दो बेटा. प्रणव को नींद आ रही है. प्रणव, ऑल वेल? हाँ, वो एकदम ऐसे ऐसे कर रहा था ना, मेरे को लगा कि भाई चाय की जरूरत है.
चाय पीता है तू? अच्छा, ठीक है, ठीक। ये यही मजा होता है जब फेस टू फेस वाले लेक्चर होते हैं ना, दिस इज फन। इनफैक्ट मेरी लाइव क्लास में बैठा होता ना, अगर फेस टू फेस क्लास होता ना, मैं सच में चाय मंगाई होती तेरे लिए दवाई से। अब नहीं, डोंट वरी बेटा। वेल, when small scale industries supply or rather export their inventions to foreign countries, then it will be called as small scale industry. Yes. See, criteria for deciding small scale industry is not whether they are selling in the country, outside the country, or the kind of thing. Criteria are their investments into the plant and machinery. Criteria is their turnover. Criteria is their employees. All right. Okay. So let me bring into to you the small scale industry. I'll just share that screen. प्रणव बेचारे को एकदम टेंशन आ गया कि मास्टर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है मुझ पर। बेटा मास्टर सब पे ध्यान देता है, मास्टर का काम ही ध्यान देना है। क्या है ना, तुम लोग वो फेस टू फेस नहीं हो ना, तो मेरे को वो ऐसे लगता है कि कब 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 वो दिन आएगा जब हम फेस टू फेस मिलेंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इमीडिएटली मिल पाएंगे। विल श्योरली बी मीटिंग इन द 12th का लेक्चर्स। 12th OCM फाउंडेशन के लेक्चर, जब सीए फाउंडेशन के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तब हम जरूर मिलेंगे। अभी मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, बिकॉज अब झगड़ा क्या चल रहा है पता है आपको मार्केट में? अब झगड़ा चल रहा है कि वैक्सीन पहले कौन लाएगा। फाइजर ने कहा कि हमारा 90% सक्सेसफुल वैक्सीन, अब तो कल का दावा था 95% सक्सेसफुल वैक्सीन। देन भारत बायोटेक कहता है कि हमारा वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है। मॉडर्ना कहता है कि हमारा वैक्सीन ज्यादा अच्छा है। एस्ट्राजेनेका कहता है कि हमारे वैक्सीन की तो कोई तोड़ ही नहीं है। नाउ दैट थिंग हैज स्टार्टेड, and till the point this vaccine battle will not get over, do you know that there are around 127 vaccines in the process? कल यूएस में एक कंपनी ने, कल नहीं कुछ दिन पहले की बात है, यूएस में एक कंपनी ने सेल्फ टेस्टिंग किट डेवलप किया है। सेल्फ टेस्टिंग किट। Now, what is this self-testing kit? That self-testing kit is you bring that kit at home, you take out your own swab and you put that into the kit and you check out whether you have got corona or not. So you need not visit the hospitals for the purpose of getting the checking, testing done. क्योंकि क्या होता है कि आप हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहां से आपको कोरोना लाना पड़ेगा। I'll tell you one thing, ये जो अभी भीड़ हुई उसकी वजह से सेकंड वेव आ रही है, दीज ऑल आर द पॉलिटिसाइज्ड काइंड ऑफ थिंग्स। टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। व्हाई? क्योंकि मीडिया अचानक इतना अच्छा बात करने लगा था मार्केट में कि अब कोरोना गया, कोरोना गया, कोरोना गया, और अचानक से वापस बात करने लगा कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना आया। तुमने ऑब्जर्व किया कि जैसे दिवाली का पीरियड आना चालू हुआ था, जैसे वो फेस्टिव सीजन आना चालू हुआ था, उस समय पे मीडिया had started promoting that corona is well in control now. They started saying that every state, every district is making the good efforts for controlling corona. और इस वजह से लोगों में अचानक वो डर कम हो गया। People started going out, and this was known to everyone कि जब आप इंडस्ट्री ओपन कर दोगे, जब आप लोगों को छोड़ दोगे, लोगों में ये मन में डाल दोगे कि अब कोरोना का डर कम हो गया या खत्म हो गया। इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करो, लोगों में डर खत्म हो गया है। पुणे जैसी सिटी में तो लोग मास्क पहन के घूमते हैं, मुंबई में मास्क पहन के घूमते हैं, दिल्ली में तो 2000 रुपए का फाइन है। बट आप गांव में चले जाओ, वहां पे फाइन वगैरह से कोई नहीं डरता है, क्योंकि वहां सारे बंदे अपनी पहचान वाले होते हैं। पुलिस वाला अपनी पहचान वाला, वो ऑफिसर लेवल का बंदा अपनी पहचान वाला, तो वो जाते हैं बिंदास, मास्क बिना घूम रहे हैं, एंड दे आर नॉट हैविंग द वरी अबाउट कोरोना एट ऑल। दिस इज अ फैक्ट व्हिच हैज हैपेंड।
और ये सारे लीगल बैटल्स जो है, लीगल नहीं पर ये जो इंटरनल बैटल्स चल रहे हैं कि वैक्सीन पहले कौन लाए, इसलिए सब झगड़े चल रहे हैं। अगर ये बैटल नहीं होते तो अब तक तो वैक्सीन मार्केट में आ गया होता। इनफैक्ट they are having crores of dosages already ready with them packed, प्रॉपर पैकिंग के साथ बॉक्सेस इनके पास पड़े हैं। they are not bringing it in the market because they are not getting the permissions for that। और हर कंट्री कहती है कि हमारा वैक्सीन सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जगह सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट हो गया है। तो कौन सबसे पहले ये मार्केट में लाएगा वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। दिस इज नोन टू एवरीवन। इंडिया में जो फॉरेन के वैक्सीन है उसके लिए नेगेटिव रिमार्क्स बनाना चालू कर दिए कि उसको प्रिजर्व करने के लिए -40 डिग्री में रखना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा दिन तक के सरवाइव नहीं हो पाता है एंड ऑल दैट। उसी तरह से इंडिया के वैक्सीन के लिए बाहर प्रोपोगंडा चालू हो गया है कि इंडिया का वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव। द सेम थिंग इज बीन हैपनिंग। So these are the kind of things which will surely be taking the trouble. Some of the supreme leaders must have already taken the vaccination. Arey Mr. Satej, I am having the internal information based on which I can confidently tell you that these political people have already got the vaccines. They have got themselves vaccinated already. This is the fact. On what basis I'm saying this is some kind of information, but that has already happened. Well, anyways, corona vaccine is not our point of discussion. Our point of discussion is small scale industry. रक्षिता वहां पे एकदम बोर हो रही है, क्या मास्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़ा रहा था और अचानक कोरोना के बारे में बात करना चालू कर दिया। सर मीडिया वाले क्या कम थे ये सब चीजें चर्चा करने के लिए कि आप बीच में लेके आ गए, आप भी मीडिया वालों के साथ मिल गए। नहीं रक्षिता, सही बात है ना? नो, I'll tell you one thing. सीरियसली जब मैं इस तरह का लेक्चर लेता हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे जब सामने एक्सप्रेशंस दिखते हैं, सामने के लोगों से जब मैं बात करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। When you react, when you respond, when you are responding to what I'm saying, that makes a lot of difference, serious difference. Even आप खुद ऑब्जर्व कर लो, initial lectures when we were having, when we had started taking the lectures, उस समय पे जब आप लुप्त हुआ करते थे और मैं अकेला दिखा करता था, आप जो हिडन कैमरे के पीछे बैठा करते थे, उस समय के लेक्चर्स और अभी के लेक्चर्स में you'll start finding the difference. Why? You'll start finding that yes, we are sitting in the class and there is someone who is watching us. इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ बहुत सारे लोगों को कि जहां जहां पॉसिबल हो वहां वीडियोस ऑन रखो, कि जो वीडियोस ऑन रखोगे ना तब मुझे पता चलता रहेगा कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अब कुछ चेहरे तो मुझे याद हो गए, like Rui is regularly switching on the videos, Rakshita is regularly switching on the videos, Pranav regularly switches on the video, Prasanna, for that matter even आज अंकिता नहीं दिख रही है मुझे, वो कई बार वीडियो ऑन रखती है। so ये चेहरे भी याद होने लग जाते हैं। विश्वजीत तेरा भी होता है यार, तो चिंता मत कर। विश्वजीत एकदम मुंह बना रहा है मेरे सामने, क्या सर आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। हाँ परितोष तू भी है। हाँ वेल, सो लेट्स कम अहेड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आभा का हमेशा होता है। आभा के पास सेटअप बना हुआ है प्रॉपर, उसका एरिया है, एरिया ऑफ स्टडीज, और वो वहीं पे बैठ के पढ़ाई करती है ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, एंड सीरियसली आई टेल यू वन थिंग, there is this there is something called as law of attraction. आप ऑब्जर्व करो, अब तो मंदिर भी खुल गए, आप कभी मंदिर में चले जाओ, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पे भी, एनी ऑफ द प्लेस वेयर यू वर्शिप, इफ यू गो देयर, आप उस मंदिर के बाहर तक हो, आपके दिमाग में 50 थॉट्स घूम रहे होते हैं। एंड द मोमेंट यू एंटर दैट टेम्पल, योर थॉट प्रोसेस चेंजेस। राहुल बताता हूं किसको अट्रैक्शन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो भी बताता हूँ। देखो मैं, रुक जा। वो बोलता है अट्रैक्शन किसको सर, कहा हम लोग अपने अपने घर में बैठे, हमारे पास अट्रैक्शन के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
हमारा सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये मोबाइल का स्क्रीन और उसका कैमरा हो गया है सर। उससे बियॉन्ड हम किसी चीज को आजकल जानते भी नहीं है। सो the moment you enter that temple, you start having the vibes, you start having a kind of positive attitude, you start having a kind of positive thinking. Sudden change होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आने वाला हर बंदा उसी तरह से सोचता है, पॉजिटिवली सोचता है, और इस वजह से तुम्हारे थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव हो जाते हैं। इसीलिए wherever you study, if that place is fixed, kind of फिक्स मतलब एग्जैक्ट, ऐसे वो इंच बाय इंच माप के आप बैठे हो कि इसी एरिया में मैं बैठेगा, इससे ज्यादा इधर उधर हिलेगा तो मेरा वाइब हिलेगा, वैसा नहीं। अ पर्टिकुलर एरिया, if you have decided to sit in that place, you automatically start having more focus. You try it out, you observe it out. आप जिस भी एरिया में बैठ के पढ़ाई करते हो, आप एक फिक्स कर लो कि मैं, वो एक बेडरूम होता है, बेडरूम में एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, मैं वहीं बैठ के पढ़ाई करेगा। If you decide like that, you'll start having more studies being done in that particular area as compared to if you do it at any other place. Why? Because you create those vibes in that area, and that makes a lot of difference. So you try it out. All right? But anyways, क्योंकि क्या होता है ना, अब जो ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं ना, इसमें आप लेक्चर अटेंड करने के लिए 50 जगहें चेंज करते रहते हो। कभी आप बेडरूम में बैठे हो, कभी आप वो टेबल पे जाके बैठते हो, कभी आप अलग जगह पे जाके बैठते हो, एंड ड्यू टू दैट योर कंसंट्रेशन इज नॉट गुड। पर वही अगर आपने एक जगह फिक्स कर ली कि मैं यहाँ बैठ के मेरी क्लास अटेंड करेगा, विच इज नॉर्मली पॉसिबल, यू आर, यस, दिस इज द पॉइंट ईशान, you unknowingly train your subconscious mind to do a particular activity the moment you reach in a particular area. That is what is law of attraction, Rahul. तेरे को समझा कौन सा अट्रैक्शन? हाँ, चलो, let's start talking about it. I hope you are able to see the screen comfortably. हाँ, so let's start talking about the concept of small scale industries now. बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया सर, ऐसा टाइम पास आप मत किया करो। हाँ, हमको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमने पैसा दिया, हमको पूरा वसूली करना है। आप ऐसा टाइम पास करोगे तो हमारा पैसा वसूल कैसे होगा? हाँ ईशान, अगली बार नहीं करेगा। ईशान पीछे से बोलता है यस सर। वेल, rising population must be given opportunities of means of livelihood. The problem of unemployment is becoming more serious in India. India क्या, आप कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक प्रॉब्लम है ही है। In post-independence period, more attention is given to the development of small-scale industries. अब जब आप small scale industry को support करते हो, तो Manish Tadeja sitting at home can start his own activities. If one is having a new concept, if one is having a new product, he can do the business in a small structure also. But that has to be properly supported. That has to be properly promoted. Because अगर support और promote ये दोनों नहीं मिलेगा, तो they will not be able to survive for a longer period of time. In fact, government ने तो कई सारे इसके लिए kind of concept लाए हैं. There is something called as SHG, Self Help Groups. SHG, वो कई जगहों पे इसे महिला बचत गट के नाम से भी जाना जाता है। Now these self-help groups or mahila bachat guts, what they have been doing, there is some institution which is providing training to them for producing something at home, and then these SHGs with the help of their group produce a large quantity of a product and they sell that large quantity in the market. So this is how that particular small scale industry has been promoted and developed and supported by the government. There are so many initiatives that the government take for the purpose of this. Speaking of unemployment, what do you think about UBI? What is that UBI, Vishwajit? In what sense you are talking about? However, the problem of unemployment is not overcome by the new industrial policies. अच्छा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अरे विश्वजीत, हम लोग हमारे देश की पर कैपिटा इनकम पे अभी तक ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है वो अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कहां यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहे हैं भैया? यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में हम कब डिस्कस कर सकते हैं? व्हेन द डिफरेंट कंट्रीज कम एट पार, when the different countries have got the same level of businesses, तब तक we cannot have a good discussion on universal basic income, because if you take the example, अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और वही अगर आप पुणे जैसी सिटी में चले आओ, यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत बड़ा फर्क है। वहां बंदा डॉलर्स में कमाता है, यहाँ पे रुपयों में कमाना होता है। अब डॉलर कमाने वाला बंदे को हमेशा पूना सस्ता लगेगा, उसको लगता है ये चिल्लर है पूना। और वही पूना में कमाई करने वाला बंदा जाएगा अगर यूएस में, और वहां पे बोलेगा भैया एक कॉफी देना, कितने का है? $1। ये पागल हो गया, हमारे पास दबे ₹20 में देता है, तू ₹70 में कॉफी देगा। That's where the difference comes. So we cannot have a discussion on universal basic income till the point we have got the financial inclusivity at the world level, right? Yes. No, he will not lose everything, Sanskruti. The point is what? That there will be more struggle there. कई सारे पुणे के बंदे जाके यूएस में सेटल हुए हैं, वहां पे वो स्ट्रगल करते करते they have got settled. There are the people who have gone to US for the purpose of education. वो जाके पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं on a part time basis. They earn from there and they spend there. All right. Can the world have the same currency? Satej, no ways. No ways it is possible. You are talking about a different level of century. At least up till 3000 this is not possible. और तब तक अगर हम लोग सर्वाइव नहीं करने वाले तो हम लोग उसके बारे में चिंता क्यों करें? Isn't it? No, I'll tell you one thing. Why? अब थोड़ा सा अलग अलग चर्चा चल रही है. I'll just finish off that thing and we'll come back to small scale industry. बहुत large level के discussion चल रहे हैं in the topic of small scale industry. तो why I'm saying this? It's all about the power, you know. Every country want to rule the world. What China is trying to do is to dominate US. What US is trying to do is not to leave the domination at all. What Europe is doing is supporting America in the places where they can dominate. अगर हर कंट्री एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहती है तो एट पार करेंसी कैसे आएगी भाई? क्योंकि अगर एट पार करेंसी आ गई तो हर बंदा एक लेवल का हो जाएगा, और हर बंदा अगर एक लेवल का हो गया तो बाकी सबकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। And that's why I said that it's not possible as such. All right. But anyways, now I think you should stop going for these kind of questions. We'll have more focus on the small scale industry. Let's have the topic moving. क्योंकि otherwise क्या होगा कि लेक्चर खत्म हो जाएगा, बट सब लोग लेक्चर खत्म होने के बाद सोचेंगे आज मास्टर ने पढ़ाया क्या, आज तो पैसा वसूल हुआ ही नहीं, राइट? वेल, an eye for an eye and the whole world goes blind. No, it's not that kind of that, Ishan. It's not an eye for the eye these days, and a chashma for the eye is also better. Like if you put up the specs and if you change the kind of thought process, by that way also you can control. Like if I'll give you a simple example on this, what China is doing. China gave a large funding to Nepal. China gave a large funding to Pakistan. और उससे क्या हुआ? अब पाकिस्तान और नेपाल ये चाइना की भाषा बात करता है, और बाय दैट वे दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट, राइट? वो कैसा होता है ना कि अगर आप शेर नहीं पाल सकते हो तो कम से कम कुत्ते तो पाल ही लो. दैट इज द काइंड ऑफ रूल, एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. क्योंकि उनको पता है कि शेर एक दिन इंसान को खा सकता है, पर कुत्ता हमेशा वफादार रहेगा. So I hope you got the message that I wanted to give. You have understood the point. Okay, let me come back to the small scale industry then.
राइवलरी फिनिश हो जाएगी धीरे धीरे. There is a huge importance of farming industries, small scale industries and cottage industries in Indian economy. क्योंकि आज भी majority of the businesses work on the labor oriented businesses instead of machine oriented businesses. वो there is something called as labor intensive and capital intensive industry. Capital intensive industry means what? The industry in which more money is required, more investment is required in the form of plant, machinery, etc. That is called as capital intensive industry. Whereas labor intensive industry is what? Where machinery में investment कम होता है. Where you do lesser investment in machinery and more work is carried out by the labor, the humans. That's the difference between the capital intensive and labor intensive. The small scale industry is more dependent on the labor intensive, whereas the large scale industries are more capital intensive. सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, चित्रे की भाकरवड़ी जो आती है वो मशीन में बनी होती है. If you are from Pune or the allied areas, if you are aware about चित्रे भाकरवड़ी, चित्रे की जो भाकरवड़ी आती है वो मशीन में प्रोड्यूस्ड होती है, क्योंकि उसका क्वालिटी मेंटेन करना है. देयर आर n नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट, और वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. वही अगर आपकी लोकल एरिया में कोई मिठाई वाला होगा, उसके पास जो भाकरवड़ी बन के आती है, दैट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन मशीन, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस, बिकॉज ही इज वर्किंग एट द स्मॉल स्केल, तो इट इज मोर लेबर इंटेंसिव. But Chitre ki Bhakarwadi has become a large scale industry now, and that's why that is machine capital intensive industry. All right. आप अमृतसर चले जाओ, वहां पे जो लंगर चल रहा होता है, वहां पे खाना जो प्रोवाइड करना होता है, 24 आवर्स लंगर होता है वहां पे. ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो दिस सिचुएशन कंटिन्यूड. तो वहां जब लंगर होता है, तो वहां लंगर के समय पे जो रोटी मिलती है, वो रोटी बंदे मैन्युअली नहीं बनाते हैं. दे हैव गॉट द मशीन देयर. दे पुट अप द मशीन, उसमें एक साइड से आटा, दूसरे साइड से पानी डाला जाता है. दैट्स इट. दे डोंट डू एनीथिंग एल्स. वो डायरेक्टली मशीन के एंड पे से रोटियां निकालते हैं, बाद में सिकी हुई, एंड प्रॉपरली सेम टू सेम सिकी हुई रोटियां होती है. व्हाई दिस इज पॉसिबल? बिकॉज इट इज कैपिटल इंटेंसिव. वहां पे मशीन में इन्वेस्टमेंट किया गया. वहीं अगर आप गुरुद्वारा, जो लोकल लेवल का गुरुद्वारा होता है, अगर आप पुणे जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में चले जाओ, यहाँ के जो गुरुद्वारे हैं, यहाँ पे मशीन नहीं है. यहाँ पे बंदे बैठे होते हैं, वो रोटियां बेल रहे होते हैं, फिर वो सेक रहे होते हैं, ऑल दैट. सो that's the difference between labor intensive and capital intensive. Remember one thing, capital intensive always require large investment into the plant and machinery, which is not the possibility for the small scale industry. इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादा लेबर अप्लाई करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेगा, कंट्रोल करेगा. व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्री? द इंडस्ट्री ऑफ योर रूरल बैकग्राउंड. जो आपके विलेज लेवल पे कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, उस चीज में ही बिजनेस करने वाली जो इंडस्ट्री होती है, उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है. राइट? ओके. इट इज the fact that unskilled and semi-skilled artisans required for any small scale industry are easily available in large number in the rural area. क्योंकि ये माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने टाउन विलेज एरिया में ही रहना चाहते हैं, तो आपको वहीं अगर उनको बिजनेस दोगे तो ही वो रिटेन हो पाएंगे. अदरवाइज दे विल गेट माइग्रेटेड टू द अर्बन एरिया एंड दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द masses. Small scale industries play an important role in such types of developing countries where there is availability of less capital and more manpower. And that's the fact. हमारे देश में small scale industry की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैसा कम लगता है, लोग ज्यादा लगते हैं, और वही हमारी सिचुएशन है. हमारे पास बहुत सारे लोग अवेलेबल है. आप आवाज मारो, देखो कैसा पब्लिक आ जाता है आपके पास काम करने के लिए. Whereas वही अगर आप बैंक के पास चले जाओ कि मेरे को 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का आवश्यकता है, तो वो बैंक वाला पहले तुमको पूछता है, तो क्या विजय मल्ल्या जो तेरे को 25 करोड़ की जरूरत है? They don't support outright.
They first look at the performance, and that's not wrong. Bankers are not here to lose their money. Bankers are here to make their money. And that's why that becomes a kind of challenge. We are going to discuss that later. Small scale industries are those in which manufacturing, providing services, productions are done on small scale or micro level. Traditionally, the industries in India which are organized on small scale and produce goods with the help of machine, labor and power are considered small scale industry. Initially, two categories were considered. Those using power with less than 50 employees, जो मैं पहले आपको कह रहा था, criteria for deciding what is small, what is large. Now those criteria have further changed. पर आपके लिए, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चार्ट मतलब MSME. For your exam, new norms laid down by Sitaraman madam are not applicable. All right? Yes. Traditionally, the industries initially two categories were considered: those using power with less than 50 employees and those not using the power with employee strength more than 50 or but less than 100. However, the capital resources invested in plant and machinery, building, etc., have been the primary criteria to differentiate small scale from the large and medium scale businesses. Now, as per the MSME Act, we have got the criteria for that. Now, in fact, what they have done in the recent one, they have made the manufacturing and service industry together. पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग को अलग ट्रीट किया जाता था, सर्विस को अलग ट्रीट किया जाता था. अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को मर्ज कर दिया गया है. विद इन दैट, माइक्रो 25 लाख, स्मॉल अप टू 5 करोड़ एंड मीडियम अप टू 10 करोड़. दिस इज देयर बिजनेस. इनका टर्नओवर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Now they have taken this 5 crore to this level in the new structure. This is not applicable for your exam. ये सिर्फ ज्ञान के लिए बता रहा हूं. This 10 crore is taken to this level and this 10 crore is taken to 100 crores for the medium enterprises, so that more and more organization will come under the criteria of MSME, and because of that they will be able to carry out the activities in a better way and उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा. इसलिए ये चेंजेस किए गए इस साल में, and those will be applicable henceforth. पर तुम्हारी एग्जाम के लिए जब तक कि ये टेक्स्ट बुक अपडेट नहीं होता है तब तक यही एप्लीकेबल है. ऑलराइट. हाँ, एक बात और, कल ही मेरी चर्चा हो रही थी किसी के साथ, तो कह रहे थे कि इस बार तो 11th की एग्जाम्स भी नहीं होने वाली है. डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग इन योर माइंड, because colleges have to prove themselves also. It is not going to happen कि एग्जाम्स नहीं होगी. अगर आपके मन में किसी ने भर दिया है, मन तेरे मन में भी अगर किसी ने भरा होगा तो, कि वो बेचारा खुद मन है ना, तो एग्जाम्स होने वाली हैं. If not in the physical format, they will be taking in the online structure. There are so many softwares which are now being developed for the purpose of taking the exams. So do not bring that thought in your mind कि आपकी एग्जाम्स नहीं होगी. ऑनलाइन नहीं बेटा, तुम्हारे लेवल तक तो ऑफलाइन ही होगी. तुम देख लेना. अब तो तेरा मन कर रहा है ना कि ऑनलाइन होनी चाहिए, अब तो ऑफलाइन ही होगी. तो देख ले, अब तेरे को जाके एग्जाम देनी पड़ेगी. ऐसा मास्क पहन के बैठना पड़ेगा. पहले हमारी सांस भरी हुई होती है, जब एग्जाम चल रही होती है, धक धक दुक 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 हो रहा होता है, और उस समय पे एकदम मास्क पहन के बैठना पड़ेगा तेरे को. तू रुक तो अभी. मैं तो अभी जाके बोलेगा कि अभी इनका ऑफलाइन ही एग्जाम लो. In fact, I'll tell you, offline exam is very much necessary. It will start giving you the feel of working, feel of studying. That's required. So any industrial unit is regarded as small scale industry if the following conditions are satisfied. Investment in fixed assets like plant and equipment, either held in ownership or
on lease or hire purchase should not be more than 1 crore. However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit. मतलब क्या? Suppose there is an organization called as Bajaj Auto, which is a large scale unit. अब बजाज ऑटो के लिए कास्टिंग मैन्युफैक्चरर, कास्टिंग छोड़ दो, लेट्स से लाइट्स मैन्युफैक्चरर, हेडलाइट, हेडलाइट हो तो बहुत अच्छा लगता है, पता है, क्योंकि सिर भारी हो तो काम नहीं होता है, इसलिए हमेशा हेडलाइट रखना चाहिए. सो हेडलाइट्स मैन्युफैक्चरर कोई अगर है तो वो बंदा, इसका अगर एंसिलरी मतलब क्या, जो एक्सक्लूसिवली उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंसिलरी और ऑक्सिलरी यूनिट. तो अगर वो किसी लार्ज स्केल इंडस्ट्री का ऑक्सिलरी या एंसिलरी यूनिट है, एंड इफ ही इज even after that he is having the investment less than 1 crore or 100 crore or 10 crore as the criteria are, then also it will not be considered as SSI. It will not be considered as small scale industry because it is already having the support of a very large scale industry. All right. तो ये सारे यूनिट जो, हाँ, मैंने अगर हेडलाइट्स मैन्युफैक्चर की और मैं एक्सक्लूसिवली बजाज ऑटो को नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं किसी को भी सेल कर सकता हूँ, किसी को भी सप्लाई कर सकता हूँ, इन दैट केस, इन सच सिचुएशन आई विल बी कंसिडर्ड एज एसएसआई. पर मैं अगर एक्सक्लूसिवली बजाज ऑटो का ही एंसिलरी हूं तो आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एसएसआई, आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन दैट केस. एम आई राइट? Classification of small scale industry in the traditional scale: handlooms, handicraft, coir manufacturer, the sericulture, khadi and village industry. This khadi and village is considered as the cottage industry. And then in the modern days we have got the bicycle part manufacturers, sewing machines, blade razor manufacturers, electric appliances, spare parts. हर industry के जो supporting activities हैं उन सब के लिए small scale industries होती हैं. All right. Now, what is the importance and advantage of small scale industry? We'll be discussing that in tomorrow's lecture. What is coir? Coir वो एक kind of mattress होता है, जैसे आपके पास फोम का मैट्रेस होता है, इसी तरह से लकड़ियों का एक मैट्रेस बनाया जाता है, that is called as coir, right? वो जो नारियल का भूसा निकलता है, नारियल का जो कचरा निकलता है ना, उस नारियल के कचरे से नॉर्मली ये कॉयर बनाया जाता है, उसको एक्यूमुलेट करके फिर उसके काइंड ऑफ ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉयर. Samruddhi will continue tomorrow. In tomorrow's session I'll be explaining that again, right? We'll meet tomorrow. Thank you. कुत्ता है ना, कौन लेंगे?